तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस point of view के साथ हमारे
सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग लूग के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें, और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से, सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए, कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए, और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned, और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाजन इन इलेक्शंस की जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें, ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर ज़रदारी साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायतें उठाई थी, और सदर ज़रदारी साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारा जो ये शिकायतें हैं ये एड्रेस होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये शिकायत इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत शिकायतें हैं, एतराज़ात हैं जो हम जमा करके एड्रेस करवाना चाहेंगे। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ये भी वालिद साहब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कहलवाया कि अब आप इस चीज़ का फ़ैसला करवा दें कि जो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको प्रूफ्स देंगे, और वालिद साहब पे हम सब भरोसा भी करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी हुआ है इसको ज़रूर हमें एड्रेस करने का सिर्फ मौका मिलेगा। मगर उम्मीद ये है कि इंगेजमेंट और इस प्रोसेस के हिस्सा बनने के नतीजे में हम इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकेंगे।
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں, دوسرے بھی اٹھاتے رہیں, کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے in the larger contrast of political stability in Pakistan that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ یہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس کا, یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں, یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا, جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے, میں ان کو یقین دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے, جو اب حکومت سازی کا عمل ہے, کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو, حکومت چل پڑے. ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے, وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے. میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکوں. اعجاز صاحب بلاول آپ سے ایک سوال ہے, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن رکھتی ہے اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے کی جائے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ ہم بذاتِ نہیں لیں گے, تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا, سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا. نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں. اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, ہمارا خون پسینہ پہ محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں. اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے. تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بھیج رہے ہیں, لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کرے, کام کریں. اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کو مینڈیٹ مل جاتا. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے, آپ سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک
आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक़ में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें चाहेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान अपने टर्म्स कंप्लीट करे, और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दिस, कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफ़रत और तक़सीम की सियासत करना है, तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फ़िक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये ज़िम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ें। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है, और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टीन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें। मलिक सही साहब। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद बार अपनी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून पे ये मुल्क छोड़ा गया तो वो देगी। अब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती तो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ़ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखें कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है उनको भी मेरे ख़्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फ़ैसले हैं। जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, ये जमहूरियत का असूल है। ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो हमारा ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ किया हैं, उनमें उनके पॉलिसीज़ पे जो हमारा एतराज़ात हैं, उस पर हम जोर दें, उस पर हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ पे इख्तिलाफ़ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप
اپنا رائے رکھتے ہو, میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے, سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے, میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے سے ہو سکتا ہے کہ میرا رائے سے ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا, جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا, اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا. شکریہ. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی, آپ نے پہلے منشور بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا, لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں. تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا, کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا. میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا, میں کہتا خان جانے, میاں صاحبان جانے, وہ حکومت بنائے, میں نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک میں. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے, کراچی کی صورتحال کیا ہے, صوبہ پنجاب, صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے. بالکل میرا فائدہ ہے. میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں ورنہ یہ نہیں ہوتا. مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے, یہ پاکستان کی محبت ہے, یہ پاکستان کے عوام کے ہم سوچ رہے ہیں. ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا, مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے, میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے, یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی, جس کے لیے میرے کارکنوں نے, میرے خاندان نے, میرے پارٹی نے شہادتیں دی, اس نظام کو ہم چلائیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا اسپیس ہے پنجاب میں, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت, اور اس سازش جو ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں موجود تھا, وہ ایک عمل جاری ہے. مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں نے والد صاحب سے کہا ہے اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر, ہر چیز کے خاطر, اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ, الیکشن ریفارمز کروائے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا, تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے, میں اپنی مرضی سے نہ کروں, ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے, اور ہمارا حکومت تھا, ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن, اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ, اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے.
हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर कहेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े? किसने कहा उनको कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े? कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। अब आप चाहते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि मैं इंतहा पसंदी सियासत इंतहा पसंद वाले सियासत करूं, वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीरियस जमात है। मैंने इस कैंपेन में और अपना सियासत में साबित कर दिया है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, मगर पाकिस्तान के अवाम ये मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि मैं अपनी बेनिफिट देखते हुए कोई एक्सट्रीम पोजीशन लूँगा। बिलावल साहब ये बताइएगा। बिलावल साहब, एक हिस्सा तो आपने जवाब दे दिया अभी, लेकिन इसी के साथ सप्लीमेंट्री ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ साजिश हुई। एक चीज़ बताइएगा कि ये साजिश किसने की? अगर नून लीग इसमें कहीं पे आपको हिस्सेदार नज़र आती है तो आपने उन्हीं के साथ बैठना है। फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात की आपने बात की है कि इलेक्शन के हवाले से आपने सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो साबित हो जाते हैं, वो तमाम जो आपके खदशात हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? जहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इश्यूज उठाए गए हैं, हमने इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने रखा, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखते रहे जो भी हमारा एतराज़ात हैं। वालिद साहब से इसलिए मैं फैसला चाहता हूँ कि वालिद साहब ने सीईसी को ये गेंदबानी लगाई इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और मेरे लोगों का एतराज़ात है उस पर, तो वो ज़रूर उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर उन एतराज़ात की वो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आएँ और इस किस्म का कानून साजी करें, इस किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करें जिससे आगे जाके कोई इलेक्शन में ना मैं उंगली उठा सके ना कोई और उंगली उठा सके। यही वाहिद तरीका है कि हम इस इशू को लेनी Sure. PTI, we just had a press conference around the corner. They've merged with the NWN, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 65 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the probability that many of the independent seats will go with PTI. What's your assessment of this calculation and how realistic is it? I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punches and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit,
I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties, so it'll be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy, but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question, जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने बोरी बंद लाशों के अलावा, बंदाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया.
पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं, तो आप एक ये बताएं कि MQM के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं MQM की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फ़ैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि MQM का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में MQM ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा, मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेज पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं कि आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करो, इंसानी बुनियादों पे, नस्ल की बुनियाद पे मेरे शहर की तकसीम हम आपको नहीं करेंगे। Thank you everyone. I think